Hello everyone. In this session, I am going to deal with the impossible trinity in polity. In my previous video, I mentioned to you the policy trilemma in economy, or which is very famously called the impossible trinity in international economics. Like three things cannot happen in any economy: fixed exchange rate, independent monetary policy, and free capital mobility. Okay, only in this continuation there is a one more concept which is quite related to this. In 2011 there is one more gentleman, Danny Roderick. So he suggested a concept like national sovereignty, globalization. This globalization is totally in the context of economy. And the third one is democracy. Like national sovereignty, democracy, and globalization in economic context or global trading system. It is difficult to maintain these for any economy or any nation. So it means that nation state, if you are a nation state, and from last 6 to 7 decade we are a nation state, we are functioning in our own economy. In after 1991 we opened our economy. So here the globalization, and then third one is that we are a world's largest and very vast democracy and vibrant democracy with a very multi-sectoral and multicultural. So, what is the meaning of this thing, and why this is very important in our economy series, or it is a more like a political economy rather economics in context. As we know that the polity is the guardian of economy. Okay. So, in this connection, if we really analyze this decade of 2020 to 2030, like 70 or 75 years already we have spent, and after 1991, so 1991 to 2021 is a 3 decade. And as I have mentioned in my one of my videos that we crossed 1 trillion economy in 2007, the second 1 trillion we have added in 2017, and the third trillion we have already added in previous year in 2000, so 20. So 21, so 2024, if we are planning our 2024 for 5 trillion economy. So this concept, so why I am trying to make this concept very essential for our investment activity also. Like these things cannot happen. It means that whether you have to difficult to maintain these things. Like trade is happening in your economy, so competitive market, you have to develop your own domestic competitive market. At the same time you have to protect your market also from the outside. Like in recent past, the government has announced Atmanirbharta, self reliant economy, or Atmanirbhar Bharat. And government is focusing on always that startup India, stand up India, startup India, stand up India. Means that you have to develop your own small scale industry, or even industry as a bigger state. So 5 year, 10 year, or 15 year down the line, whether this particular industry will be facing a huge and very vast kind of competitiveness. And conceptually, theoretically, it has been proved, like globalization, democratic setup, and national sovereignty. It means that you have opened your economy. As I mentioned in my 1991 to 2021 and first 10 years, we have faced hardly any political stability in our country. तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है आपकी इकोनॉमी पे कि हमने सिर्फ 2 डिकेड में ये डेवलपमेंट को पाया है। और नेक्स्ट जो फेज है, और ड्यू टू कोविड सब कुछ क्लोज रहा और हमने सब कुछ ओपन किया, इसके बाद से ये मेंटेन कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा. सो यू विल बी फेसिंग स्टिफ कॉम्पिटिशन इन एनी वे. So industry by industry, the competition
competition is very huge, very rigorous cutthroat competition, there is no doubt in that. So you have to make a policy level पे आपको protectionism को develop करना होगा, और protectionism को develop करना होगा, और at the same time world level पे आपको global standard और global trading system को भी develop करना है here, since you have global trading system, and आपको अपनी sovereignty को भी वो बचाना है, नेशनल sovereignty. तो नेशन स्टेट के तौर पे हमारा एक स्टैंड होगा, डेमोक्रेटिक सेटअप में हम लोग फंक्शन कर रहे हैं, सो वी हैव अ डेमोक्रेटिक राइट ऑलरेडी, लाइक एवरीवन हैज अ राइट टू स्टार्ट इट्स ओन ऑर्गेनाइजेशन, ओन कंपनी, lot of political and economic ideas as well as. The third one is economic or concept पे. But one thing that is quite clear कि नेशन वाइज ग्रोथ होगा. तो हमने ये जो 5 ट्रिलियन का जो एक इकोनॉमी सीरीज में जो एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जितने ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं, ये ऐसा नहीं है कि यू गो एंड थ्योरेटिकली कि ये वाइट पोस्ट है, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ योर प्रैक्टिकल रियलिटी, दैट इज़ नॉट सो. सो फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ये सारे कॉन्सेप्ट, और पॉलिटी इज़ द गार्डियन ऑफ इकोनॉमी, ये हम लोग सुनते आ रहे हैं. तो पॉलिटिकल सेटअप में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटी वी कैन से, और इंटरनेशनल इकोनॉमी, डैनी रॉडिक का मॉडल और वो जो मंडल और फ्लेमिंग का मॉडल था इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए नो नथिंग इन्वेस्टर या जिसको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, यू गो एंड डायरेक्टली इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड. आई ऑलवेज सेइंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि irrespective of or regardless any you go from any particular share or a stock, it is better or advisable to invest for this 10 years 2020 to 30 in any index fund. As I mentioned to you, there is a linear relationship between your GDP say, and economic indexes or capital market indexes, it may call, like your Nifty or Sensex. In long term you will be finding the plot is quite linear. तो इस कॉन्सेप्ट से भी अगर हम देखें तो डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया, सो नेक्स्ट डिकेड में हम लोगों का ये काफ़ी अच्छा जो है, ये इकोनॉमिक वाइज ग्रोथ वाइज काफ़ी अच्छा ये होने वाला है. लेकिन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री कौन सी ऐसी है, ये कह पाना बहुत डिफ़िकल्ट है. इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडस्ट्री. अगर आप इंडस्ट्री वाइज ये कह पाना अगर मुश्किल हो रहा है, तो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है. सो प्रोटेक्शनिज्म का ये ज़माना है, ये भी एक सही है उस मॉडल से. डोमेस्टिक लेवल पे आपको बहुत सा कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में मिलेगा, ये बात भी सही है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंडेक्स फंड. Even though you will be getting a lot of opinions, lot of thoughts, lot of theories, lot of policies, but I recommend, strongly recommend, और वो एक बच्चन साहब की कविता भी है कि अलग अलग पथ बतलाते पर मैं ये बस बतलाता हूँ कि राह पकड़ बस एक चला चल पा जाएगा मधुशाला. तो इंडेक्स फंड यू विल बी गेटिंग, बिकॉज इंडेक्स इज डायरेक्टली कोरिलेटेड टू योर इकोनॉमिक ग्रोथ, योर जीडीपी. तो कंट्री की जीडीपी जाएगी और आप इसमें सीधे जो है एक स्मॉल अमाउंट से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग एन एवरेजिंग कॉन्सेप्ट. In my further videos also I am going to deal about this averages, why this averages are very important in the context of. So after international polity, this concept, this model of international polity or political economy it may called, and in the impossible trinity in economy I'll be mentioning about the mechanism and how this monetary transmission is also going to. So kindly refer on my previous video in which I mentioned to you about how economy and national index fund. So index fund, how it is going to
influence, and it is my humble request for everyone. At least if you think that you are quite comfortable and quite you say for expert of this particular market, but again I recommend that at least make a small portfolio in index fund also. Thanks for everyone. Okay, thank you.